So again, I Anjum Bhati Nirban welcomes you to join the class of English Literature. As you all know, yesterday we read a story, a half story, in which we read there were two friends, Jumman and Algu. They were very best friends, but due to some reason they were not best friend because of a case. So आगे हम further details will be continue today. So the success in doing a good deed takes a long time to come, but not so in the case of bad deeds. And the opportunity to get back at Algu came to Jumman very soon. इसमें क्या बताया गया है कि जरूरी ऐसा नहीं था कि वो उनकी दोस्ती टूट गई, बट आगे भी उनकी मुलाकात होती है. वो कैसे होती है देखिए. The oxen were of the Panchyat breed. Sorry. A year ago, Algu had purchased a handsome pair of oxen from Batisa. Batisa is a place, okay, so where the Algu had purchased a pair of oxen. Okay, क्या खरीदा था उसने? एक pair of oxen जिसमें two oxen थी, ox थी, ठीक है? The oxen were of the Persian breed. Breed, it's a kind of, we can say, the prajati, okay? Out of pure chance, one of the oxen died just a month after Jumman's पंचायत. जुम्मन की पंचायत जब बैठी थी उसके एक महीने बाद उसमें से कोई एक ऑक्सन मर चुकी थी. ठीक है, तो वो कोई रीजन नहीं बताया गया है हमें स्टोरी में, बस ऐसे ही बताया गया है कि कोई एक ऑक्सन दोनों में से एक मर चुकी थी. जुम्मन सेड टू हिज फ्रेंड दैट अलगू हैड बीन पनिश्ड फॉर ट्रिचरी. जो भी उसने किया है, ट्रिचरी इट मींस टू एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म समबडी हु ट्रस्ट यू. यानी आपने किसको ट्रस्ट, आपने किसी पर ट्रस्ट किया और आपने उसी को ही हार्म पहुंचा दिया, या उसने आपको हार्म पहुंचाया है. ठीक है, तो ऐसा हुआ था जुम्मन के साथ कि जुम्मन ने अपने बेस्ट फ्रेंड पर ट्रस्ट किया, बट अलगू ने जो भी फैक्ट था, फेयर जजमेंट था, वो करके उसको थोड़ा सा हार्म पहुंचाया था. किसे? जुम्मन को. तो जुम्मन ने ऐसे कहा कि अल्लाह ने उसे पनिशमेंट दी है इस चीज की, उसकी ऑक्सन मर गई है क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया था, गलत डिसीजन लेके. वन मे रेस्ट कंटेंट बट गॉड फ्रॉम अबाव कीप्स वॉच ऑन आवर गुड एंड बैड डीड्स. यानी जुम्मन ने ये कहा कि जो भी हम करते हैं, गॉड हमें उसकी पनिशमेंट हमें यही दे देते हैं. अलगू ऑन द अदर हैंड, while Algu was thinking that, began to suspect that Jumman had poisoned the ox. और अलगू ने क्या सोचा कि मैंने जुम्मन के साथ उसके अगेंस्ट डिसीजन लिया, तो अलगू ने जुम्मन ने मेरी ऑक्स को पॉइजन देकर मार दिया है. यानी दोनों के दिमाग में ये बातें चल रही थी अगेंस्ट ईच अदर. ओके, अलगू फाइनली डिसाइडेड टू सेल ऑफ द अदर ऑक्स. बाद में अलगू क्या डिसाइड करता है कि मुझे मेरी अदर जो सेकंड ऑक्स है उसे भी सेल कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मेरे कोई काम की नहीं थी. A trader named समझू साहू bought the ox. एक ट्रेडर था जो सेल करता था, बेचता था, खरीदता था, तो समझू साहू नेम था. उसने क्या किया? ऑक्स को खरीद लिया. As soon as he bought it, he began to drive it hard. जैसा ही उसने खरीदा वो उससे बहुत हार्ड वर्क करवाया करता था. He made 3 to 4 trips every day. उस ऑक्स से वो क्या करता था, 2-3 डेज या ट्रिप्स लगवाया करता था अपना सामान या लोड करके सामान उसके ऊपर. ठीक है, विदाउट केयरिंग टू फीड द एनिमल प्रॉपरली, और उसे अच्छे से फीड भी नहीं करवाया करता था. वन डे ऑन हिज फोर्थ ट्रिप, समझू पुट अ डबल लोड ऑन हिम. किसके ऊपर? ऑक्स के ऊपर डबल लोड डाल दिया. द ऑक्स कोलैप्स्ड, यानी ऑक्स गिर गई, बिल्कुल बुरी तरीके से उसके ऊपर लोड था, ओवरलोडेड था, तो वो कोलैप्स हो गई. एंड डिड नॉट राइज अगेन, और फिर से नहीं उठी. हु वुड पुल द कार्ट नाउ? एंड समझू सोचने लगा अब इस कार्ट को कौन उठाएगा. ही वॉज बर्निंग विद एंगर, और वो गुस्से से बहुत लाल हो गया. ही हैड सोल्ड मैनी ऑफ गुड़. गुड़ किसे कहते हैं? जो हम खाते हैं ना, ठीक है, जैगरी जिसे कहा जाता है. मैनी टेन्स ऑफ घी एंड वॉज कैरिंग अबाउट 250 रुपीज विद हिम. यानी वहां पर बहुत सारा घी था, गुड़ था, और अपने साथ कितने रुपीज लेकर गया था? 250 रुपीज. इन एडिशन देयर वर अ फ्यू सेक ऑफ सॉल्ट. और अगर एडिशन में बात करें तो उसके ऊपर क्या क्या लोड था? सॉल्ट भी था, टेन ऑफ ऑयल, ऑयल भी था ऑन द कार्ट, कार्ट के ऊपर. अब सोचिए एक ऑक्स के ऊपर कितना हैवी बर्डन था जिससे वो कोलैप्स हो गई. ही कुड नॉट लीव देम हियर. अब वो बिल्कुल भी अकेला उसे छोड़कर नहीं जा सकता था. हेल्पलेस ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द कार. और उसने क्या डिसाइड किया? ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट over there in the cart only. In the morning when he got up, he found his money and some of his things stolen. और जैसे ही वो मॉर्निंग में उठा, what he found? That he found that his money and some of things
from the tents was stolen. He reached home wailing and weeping. रोते हुए और गुस्से में वो घर पहुंचा. When his wife heard the story, first she cried and then started cursing Algu for having sold them a useless ऑक्स. सबसे पहले उसने ये सारी बात किसको बताई? अपनी वाइफ को बताई कि बहुत कुछ सामान चोरी हो चुका है. एंड फर्स्ट हिज वाइफ स्टार्टेड क्राइंग एंड देन शी स्टार्टेड कर्सिंग अलगू. से बुरा भला कहने लगी कि उसने हमें एक यूजलेस ऑक्स को बेचा है. मैनी मंथ्स पास्ट, बहुत टाइम बीत गया यानी मंथ्स निकल गए. वेन एवर अलगू वेंट टू देयर हाउस टू आस्क फॉर द प्राइस ऑफ द ऑक्स, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वुड स्टार्ट अब्यूजिंग हिम. जब भी अलगू मनी के लिए उनके घर जाता तो बोथ द वाइफ एंड हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम, उसे गालियां निकालने लग जाते थे. फाइनली दे डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत. अब वही सेम डिसीजन वो लेते हैं जैसे उस अंट ने लिया था अगेंस्ट जुम्मन, वैसे ही अलगू के अगेंस्ट में कौन लेता है पंचायत, कौन बुलाता है? वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ यानी समझू साहू और उसकी वाइफ. So what happened next? We'll see here. The panchayat began its meeting. अब दोबारा अब एक पंचायत आती है, किस लिए? ऑक्स के सिलसिले में. रामधन मिश्रा जो कि पंचायत में हेड होता है said, why waste time? क्यों टाइम को वेस्ट करना? Let us elect the 5 members. हम 5 members को इलेक्ट करते हैं. कम चौधरी, whom do you elect? यानी किसको कहा था? अलगू चौधरी को कहा आप किसे इलेक्ट करना चाहोगे? अलगू said in a humble voice, लेट समझू चूज. यानी जैसा जुम्मन ने कहा था ना कि अंट को चूज करने दो, वैसे ही अलगू ने कहा कि समझू को चूज करने दो, जो भी होगा देखा जाएगा. समझू स्टूड अप एंड सेड शार्पली, बहुत ही दिमाग लगा के उसने कहा, आई चूज जुम्मन शेख. मैं किसे चूज करूंगा? जुम्मन शेख को चूज करूंगा. एन अवेयरनेस ऑफ द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी often alters our narrow outlook. When we lose our way, this awareness shows us the light. Juman Sheikh also become conscious of such a responsibility. यानी इसमें बताया गया है जब हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो हम बहुत अवेयर हो जाते हैं. हम वहां पर रिलेशनशिप को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे. तो जुम्मन भी ऐसा ही चाह रहा था. The moment he was given the high office of the सरपंच, यानी जुम्मन को सरपंच बनाया गया था, he realized that at this moment he was seated on the highest throne of justice and righteousness. Whatever he uttered, जो भी वो बोलेगा, now would be the word of the God. और वो कौन सा वर्ड होगा? गॉड की तरफ से होगा. And any prejudice of his mind, कोई भी भेदभाव या फिर कोई भी डिसीजन उसके लिए अनरीजनेबल डिसलाइक अगर उसके लिए निकलेगी, of his mind must not contaminate that voice. और कुछ भी गलत उसके साथ उसके मुंह से निकलेगा वो सही नहीं होगा उसके लोगों के लिए. He must not deviate even a bit from truth. Deviate meaning is depart, यानी कुछ भी उसे ट्रुथ बोलने से डिपार्ट नहीं होना चाहिए. जो भी होगा वो सच का साथ ही देगा. Who is thinking over here? Yes, जुम्मन. He announced the judgment. उसने जजमेंट सारी बातें सुनी, फिर जजमेंट अनाउंस किया. अलगू चौधरी एंड समझू साहू, इट इज प्रॉपर दैट समझू साहू शुड पे द प्राइस ऑफ द ऑक्स. यानी समझू साहू को क्या करना होगा? ऑक्स का प्राइस ही देना होगा. द ऑक्स वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज व्हेन ही बॉट इट. जब उसने इसे खरीदा था, जब ऑक्स को कोई भी बीमारी नहीं थी. इफ द प्राइस हैड बीन पेड देन समझू वुड नॉट हैव बीन एबल टू रेज दिस क्वेश्चन. और अगर प्राइस दे दिया है तो समझो कोई नहीं होता यहाँ पर कि ऑक्स के लिए कोई क्वेश्चन रेस करे. अलगू चौधरी वॉज ओवरजॉयड. ये सब सुन के आफ्टर लिसनिंग ऑल द थिंग्स, ऑल द जजमेंट, अलगू चौधरी वॉज वेरी हैप्पी. ही स्टूड अप एंड शाउटेड विक्ट्री टू पंच परमेश्वर. परमेश्वर हियर इज यूज्ड टू सरपंच. ओके, तो विक्ट्री हो गई है किसकी? सरपंच की. दिस वाज इकोड. इकोड मींस रीसाउंड यानी गूंजना फ्रॉम ऑल द साइड. सारी तरफ से आवाजें आने लग गई. विक्ट्री टू पंच परमेश्वर. एवरीवन एडमायर्ड जुम्मन्स जजमेंट. यानी सबको अच्छा लगा किसका जजमेंट? जुम्मन का जजमेंट. दिस इज जस्टिस. दिस इज नॉट द वर्क ऑफ मैन. ये किसी मैन का वर्क नहीं है. गॉड हिमसेल्फ रिसाइड्स इन द पंच परमेश्वर. यानी लोग क्या कहने लगे कि गॉड खुद उस सरपंच में आ जाते हैं जो वहां पर पंच बनाया जाता है. ओके, एट द एंड जुम्मन केम टू अलगू एंड एम्बैरेसिंग यानी शर्मिंदा हुआ. एट हिम सेड, और कहा,
ever since you had given the judgment against me, I had become your enemy. जैसा कि तुमने मेरे against judgment दिया था, मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था. But today I have realized that while sitting on that seat, कौन सी सीट पर? सरपंच की सीट पर ऑफ जजमेंट, यू आर नो वन फ्रेंड और फो. फो मीन्स एनिमी, कि आपको कोई फ्रेंड नहीं दिखाई देता है, ना ही कोई एनिमी दिखाई देता है. आपको किसके लिए वर्क करना होता है यहाँ पर? जो ट्रुथ के साथ चलना होता है. ओके, यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वन एक्सेप्ट जस्टिस. आपको जस्टिस के अलावा किसी और रिलेशन पर ध्यान नहीं देना होता है. व्हाट रियलाइज बाय द जुम्मन, एंड दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन. So I hope you like this story, and for you I have a short video. Have a look, everyone. The Holy Panchyat. Hello friends. There are times in life when you fight with your brother or sister. You go to your parent hoping that they would take your side. Sometimes they do and you are happy. But sometimes they punish you because they feel you are wrong. Then you get really angry. But is that correct? Our story today also revolves around the concept of fair judgment. Let us know how. The story is about two friends, Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. They were very good friends and partners in farming. Jumman had an old aunt who had some property. She had no other near relative. Jumman asked her to transfer her property into his name. Once it was done, he and his family started troubling the aunt. The aunt could take it no more. She went to Jumman and asked him for a monthly allowance to manage on her own. Jumman gets angry and says, "Do you think we grow money here?" The aunt decides to call the Panchayat. Jumman is happy at the offer as he feels that nobody would go against him in the village. One evening, the elders in the village collect under a tree. Jumman's aunt tells them her sad story. One member, Ramdhan Mishra, asks Jumman to select the Panchayat members. He declines the offer and says, "The word of the Panchayat is the word of Allah. Let my aunt choose anyone she wants. I have no objection." Aunt calls on Algu to be the Sarpanch. Jumman hides his happiness and says, "Let it be Algu. For me, Ramdhan and Algu are the same." Algu does not want to come between Jumman and his aunt. But he agrees when aunt says, "Son, no one barters his iman for friendship. God resides in the heart of a punch. Whatever the punch says is the word of God." Algu comes forward and tells Jumman that he and aunt are equal in his eyes. Jumman should state his case to the Panchayat. After hearing Jumman's case, the Panchayat decides in favor of the aunt and asks Jumman to give her an allowance against the valuable property he has inherited from aunt. Jumman is stunned. That ends the friendship between Jumman and Algu. A year ago, Algu had bought a pair of oxen. A month after the Panchayat, one of the oxen died. The other ox was of no use to Algu anymore, as it could not plough the field alone. So he decides to sell it. He sold it to Samju Saha, who promised to pay him for the ox at a later date. Samju was a ruthless trader. He would take the ox on 3 to 4 trips a day with heavy load on its back without giving it much to eat. One day, on the 4th trip of the day, Samju loaded the cart with double the usual weight. The poor ox fell down dead. Samju was left with the loaded cart. It was evening and he had to stay the night in the cart. In the morning, Samju found some tins and money missing. He went back home crying. His wife started cursing Algu for having sold them a sick ox. Algu went to seek his payment many times. Every time, Samju and his wife would drive him away angrily. Finally, they decide to call the Panchayat.
Ramdhan Mishra asked Algu to select his panchayat. Algu asked Samju to do so. Samju quickly declared that Jumman should be the sarpanch. Once he's declared the sarpanch, Jumman realizes that he has to keep aside his enmity and give a fair judgment. He decides that Samju should pay the price of the ox, as it was not suffering from any disease when he bought it. If the price had been paid timely, this panchayat would not have been called. Algu gets up and shouts, "Victory to Panch Parmeshwar!" Others also join in chorus. Jumman comes up to Algu and hugs him. He realizes his mistake and says, "I have realized that while sitting on that seat of judgment, you are no one's friend or foe. You cannot think of anything except justice. So, my dear friends, I hope you understand the choices your parents make. They decide based on what is fair. So, next time, don't get annoyed when mummy goes against you. Realize your mistake and try not doing it again. See you soon. Bye." So I hope you enjoyed the video, also like the chapter. So everyone try to learn given word meanings, and we again will be continuing this chapter with question answers and book exercise in our next class. Till then, take care of yourself. Bye bye everyone.